Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience and get your dream job. In this video, I'm going to talk about two exams, NICL AO Legal and GIC Re-Legal, and I'll be discussing the strategy to prepare for both these exams together. First of all, let's look at the important dates for these two exams. The online registration for NICL AO exam started from 2nd Jan and will last up to 22nd of Jan. While for GIC Re-Legal, it started from 23rd of December and will last up to 12th of January. Coming to the vacancies and eligibility in NICL, there are 20 vacancies in the legal stream. For law, you should be a graduate or postgraduate in law with at least 60% marks. Your age should be between 21 and 30. For GIC Legal, there are 7 vacancies. Bachelor degree in law is required with minimum 60%. LLM and experience is desirable. Now coming to the exam pattern. In NICL, you have 3 phases: prelims, mains and interview. While in GICD, you have one written exam and then interview. In NICL, in prelims, you have quant, reasoning and English. There is sectional cutoff, there is sectional timing. But this paper is only qualifying. In mains, you have 6 subjects: reasoning, English, general awareness, computer, quantitative aptitude and law. These are the number of questions in each section and the marks of each section. There is one descriptive test as well, which is of 30 minutes. 30 marks का test है. Essay, Presky और comprehension होगा, each of 10 marks. Now coming to GICD. In GICD, there is only one online exam, in which part A is high order reasoning ability और critical thinking. इसमें आपको high order reasoning puzzles मिलेंगी, seating arrangements, analytical reasoning, critical thinking questions will be there. This part A has 40 marks and number of questions are 40. Then coming to your part B, in part B you have reasoning, English language, general awareness, numerical ability and computer literacy. यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, बट पार्ट बी में सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं है. इन पार्ट सी देयर इज इंग्लिश लैंग्वेज, एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन. 30 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है. देयर विल बी 123 क्वेश्चंस. और भी डिटेल्स मेंशन है विद रिस्पेक्ट टू GICD. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होना चाहिए इन ऑनलाइन टेस्ट एंड ओवरऑल ऑनलाइन टेस्ट GD इंटरव्यू में भी 60% होना चाहिए. There is negative marking present in both the exams. NICL और GICD दोनों में ही 1/4 negative marking present है. Test timings are also mentioned. 150 minutes का टेस्ट है. 30 minutes आपको पार्ट ए के लिए मिलेंगे. पार्ट ए में 40 क्वेश्चंस हैं हाई लेवल रीजनिंग के, उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे. देन आपको 60 मिनट्स मिलेंगे फॉर पार्ट बी एंड 60 मिनट्स फॉर पार्ट सी. पार्ट सी विच इज डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 30 मार्क्स. इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा. एंड सिमिलरली पार्ट बी, जिसमें आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं. इन 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे. GIC री में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मार्क्स ऐड होंगे. NICL में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज ओनली क्वालिफाइंग, while GIC री में आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मार्क्स भी ऐड होंगे. Overall marks scored in objective and descriptive section taken together against 150 will be used to shortlist for group discussion and interview. तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉमन इन बोथ. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी इज प्रेजेंट इन बोथ. कंप्यूटर नॉलेज इन बोथ. जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग भी दोनों में है. हाई लेवल रीजनिंग सिर्फ GIC लीगल में है. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी दोनों में है. टाइम का डिफरेंस है. एंड लॉ इज प्रेजेंट ओनली इन NICL. डिफरेंस इज इन द सेक्शन विच इज मार्क्ड इन ऑरेंज. आपको GIC लीगल के लिए हाई लेवल रीजनिंग अलग से पढ़ना होगा और NICL के लिए लॉ को पढ़ना होगा. अब आप यहाँ पर देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, तो आपको दोनों एग्जाम्स के लिए पढ़ना है. तो आप दोनों को ही एक साथ टारगेट करके चल सकते हैं. आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं. And in order to help you prepare for both these exams together, we are bringing a combo course. In our NICL AO Legal online course, we have also added content and tests for GIC exam. In the introduction and strategy, you will find the introduction, the notification information of both the exams NICL and GIC. Then you have NICL prelims, जिसमें आपकी QRE के sections है. Then you have NICL means. This section can also be used for GIC written test. रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और साथ ही इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केट अवेयरनेस. ये दोनों पार्ट्स आपके जनरल अवेयरनेस में यूज होंगे. देन कंप्यूटर नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, these are also present in GIC. This legal is the portion which is extra in NICL.
और साथ ही साथ टेस्ट ऑफ रीजनिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको हाई लेवल रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे विच कैन बी यूज टू प्रिपेयर फॉर पार्ट ए इन GIC. And in full length practice test, you will get the mock test for both NIC Legal and GIC Legal. So you can use this course to prepare for both these exams together. Still, if you are having any doubts, any queries with respect to preparation of any of these exams or both these exams together, you can join the workshop which I am conducting tomorrow at 7 p.m. Though this workshop is with respect to queries for NICL AO, I will also cater to preparation for GIC Legal as well. You can plan and prepare for both these exams together. In order to join the workshop, you will have to register through the link which is present in the description below. Be there and I'll try to answer all your queries in this workshop. We at iExamB help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.